अस्सलाम वालेकुम। पाक MCQs से आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में तकरीबन 30 तक MCQs करेंगे जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 2023-24 के सवाल उसके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडो Pak War of 1965 lasted for dash days, 17 days. Option B is the correct answer. इसका थोड़ा सा ब्रीफली दिखाया गया है। 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 1965 तक ये जंग था। इंडो पाक वार 1965 Indo-Pak War of 1971 lasted for 13 days. 3 December to 16 December 1971। ये थोड़ा सा इसका ब्रीफली हिस्ट्री दिया गया है कि ये 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये जंग लड़ी गई थी और इसमें ये 1971 का जो जंग था ये 13 दिन के लिए था और 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक था ये 71 वाला जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फाउंडेड literary society in 1863? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, नवाब अब्दुल लतीफ। फाउंडेड एट कोलकाता, Mohammedan Literary Society was established in 1863. The member who was founded this was Nawab Abdul Latif. Option C is a correct answer. Founded at Calcutta. The founding place is Calcutta. Next question. Muhtarma Fatima Jinnah had which of the following occupation? Dentist. In this मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो शोबा था वो डेंटिस्ट था। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। हु बिल्ट बादशाही मस्जिद? औरंगजेब आलमगीर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। द प्लेस वेयर बादशाही मस्जिद इज लोकेटेड इन लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element that does not occur in nature but can be produced artificially is called platinum. Option as a correct answer, platinum. Next question, spinach. Spinach leaves are rich source of iron. Option B is a correct answer. Question number 7, which vitamin get destroy on heating? कौन सा विटामिन तबाह होता है हीटिंग पर? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 8, काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाय का दूध सबसे बड़ा जरिया है विटामिन ए का। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। Question number 9, which of the following vitamin is synthesized in the body by intestinal vitamin K? यानी वो विटामिन जिसको सिंथेसाइज किया जाता है जिस्म में इंटेस्टाइन की वजह से, वो विटामिन के। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। मर्करी इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, मर्करी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी डे आर फॉरबिडन फॉर सम फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर? रोजे रखने के लिए कितने दिन मना किए गए? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, 5 days आर फॉरबिडन फॉर फास्टिंग आर सोम। इन दिस वीडियो fasting on 2 days Eid ul Fitr and Eid ul Adha, that is
haram. It is also haram for first on the day of al-Tashriq, which are the 3 after Eid al-Adha, 11th, 12th and 13th of Zulhijjah, because the Prophet ﷺ said the day of Tashriq, day of eating, drinking and remembering Allah, narrated by Muslim 11:41. ईद उल फितर के जो रोज़े हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ये हराम हैं। और इसी तरह 11 ज़ुल्हज, 12 ज़ुल्हज और 13 ज़ुल्हज के ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा है कि ये तशरीक़ के दिन है, ये खाने पीने और याद करने के दिन हैं। ये मुस्लिम में ये हदीस लिखा हुआ है, जिसका हवाला दिया गया है 1141 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ इस्लामिक आर्मी? हज़रत हमज़ा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी पहला आर्मी कमांडर जो था वो हज़रत हमज़ा था। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, who was chosen by Hazrat Umar Raziyallahu anhu to lead the Muslim army in the Battle of Qadisiyah? Option C is a correct answer. Hazrat Saad bin Abi Waqas Raziyallahu anhu. Question number 14. Hazrat Musa met with the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam on the dash heaven. 6th heaven. Hazrat Musa salam met with the Holy Prophet Muhammad sallam on 6th heaven. छठे आसमान पर हज़रत मूसा सलाम को मुलाकात हुआ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द प्लेस विच इज कॉल्ड सेक्रेट मोनुमेंट इन द होली कुरान मुज़ल्फ़ा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी वो जो मुक़द्दस मोनुमेंट जिसको करार दिया है वो मुज़ल्फ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज मस्जिदुल हनीफ लोकेटेड वेयर ऑलमोस्ट 40 प्रॉफिट आर बरीड? मीना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 624 AD। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का शादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कब हुआ? 624 AD को। क्वेश्चन नंबर 18, इंजील मीन्स डैश गुड न्यूज़, तौरात मीन्स लॉ, ज़बूर मीन्स पीसेस। इंजील का मतलब है अच्छी खबर, जबकि तौरात का मतलब है कानून, लॉ। ज़बूर का मतलब है पीसेस, टुकड़े टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द बैटल विच कम टू एन एंड विद द रिजल्ट तबूक। ऐसी जंग जिसका रिजल्ट के बगैर इख्तिताम हुआ वो तबूक। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर इन 19 क्वेश्चंस। शॉर्ट की फॉर चेंज केस इज, शॉर्टकट की फॉर चेंज केस इज। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर इन 20 क्वेश्चंस। 21 question, pressing F8 key for 3 times select a sentence. Option A is a correct answer in 21 questions. Question number 22, what is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? 1638. Option C is the correct answer. By default font size MS Word Office 8 to 72. Question number 23. Question number 23. Windows 10 was launched in the year 2015. Option C is the correct answer. Windows 10 कब शुरू हुआ? 2015 में शुरू हुआ। Option C दुरुस्त जवाब है। 23 questions. How many sheets are there in Excel workbook by default?
Option B is a correct answer in 24 questions. Question number 25. Shortcut key to create a new folder on a window PC is CTRL plus Shift plus N. Option C is a correct answer on question number 25. Dear friends, if you like this video, then click on Pak MCQs and share with your friends and press the bell icon for informative video. Thank you for watching this video.